राज्यात चोरयांचे प्रकार दिसान दीस वाढतूच आसा। बार्देस तालुक्यात तर सद्याक चोरांनी हाहाकार घालून दवरला। अशें आसतनाच आनी एक चोरीची घटना कलंगूट वाठारांतल्यान आयकुपाक येता। कलंगूट मार्केटा लागीं आशिल्ल्या ब्रागांचा अपार्टमेंट्स हांगासर पयल्या मजल्यार आशिल्ल्या एका फ्लॅटान घुसून चोरांनी 90,000 कॅश तशेंच 1.5 लाखाचे भांगर फारायल्ल्याचें मुखार येता। हो सगळो प्रकार त्या फ्लॅटान आशिल्ल्या सीसीटीव्हीन रिकॉर्ड जाला। स्पायडरमॅना भशेन चढून तो चोर घरान आयिल्ल्याचें घर मालकांचें म्हणणें। सीसीटीव्ही आसून लेगीत चोरी जाली हाका लागून खंय तरी चोरांक आतां भंय उरलो ना असो लोकांचो समज जावपाक लागला। मजगतीं ह्या घटनेचेर पोलीस तपास चालू आसा। He climbed up from here to here, and then we can see from our camera that he climbed up again to our balcony. He grabbed the grill that we have, and like a monkey he swinged into our balcony from there. You can see there. He was totally a professional thief, that we can say. The way he climbed up, and he jumped from there when he was done. So when he was done stealing things, he jumped from there, that place, and he directly went from here. He didn't care about anything that someone would see. The cash now can be seen inside his left pocket, as can be seen from the CCTV camera. Then he didn't care. He directly went. He used the main road to go. He didn't try to escape like a thief. He was exactly like it. He went from here. He openly went onto the road. Naikawado. Next to the fish market. Next to the fish market, near this Braganza hospital. Mostly theft happens in this area only. At 5 a.m. in the morning exactly, many of the drug addicts, junkies, they come here, they sit in the backyard of a building, and thieves also do their work here only. Can you show me the place? From where they entered? Yeah, where they entered. Come. Yes. Nana. आएंगे वो देखने के लिए। Hey. Come. So he came from this window, and the handbag was hanging here. Okay. So there was money and gold inside the handbag. And they also tried opening this cupboard because it was open. So the person thief came from this window, and he got the money inside the cupboard only because it was here unlocked. He opened the cupboard, and there was one handbag inside, in which there was cash and gold. So he took it from there, and straight away he left. The grill was open or what? The grill was open, nah. The grill was open. Grill was open. Okay, so he came from here. Even if he entered the room now, we could have noticed it. He didn't enter the room. It was locked. The door was locked. So he got the money from here only. And the money and the Gold, chain also. everything. So he came and he grabbed this grill that we have. You can show. Okay, so first he came from here. He climbed up and he grabbed this mesh, and then he came swinging. With the support he came. With the support he came inside. He came from here, and then by grabbing that he came in here. 94,000 कैश लेके गए हैं, 15 ग्राम की चेन और 10 ग्राम की 2 अंगूठी लेके गए हैं। चोरी की पूरी अपडेट क्या है? चोरी कितने बजे की चोरी हो गई और चोर कैसे हाँ। क्या है? चोरी हुई है 4:54 पे चोर हमारे घर के अंदर आया और गैलरी के रास्ते से आके और हमारी गैलरी में आया और उसने कबाड़ खोला, उसमें से उसने कैश और गोल्ड लेके गया। लेकिन काफ़ी देर पहले से वो रात में ही वो हमारे एरिया में घूम रहा था और वो आने की कोशिश कर रहा था। वो हमारे सब सीसीटीवी कैमरास में आया है। 4:27 पे भी वो एक बार आया, चक्कर लगाया, लेकिन चला गया। जब उसने देखा मौका
कि कोई नहीं है, तब वो आया और पीछे के रास्ते से गैलरी में कूदा और उस वहाँ से वो लेके गया। कितने लोग थे ये लोग? 2 लड़के थे, एक तो बाहर ही छुप गया और दूसरा जो लड़का था वो अंदर आया और उसने चोरी करके गया। पहले आके उन्होंने पूरा सर्वे किया, देखा था? जी हाँ, पहले वो पूरे एरिया की और हमारी बिल्डिंग की रेकी कर रहे थे, हमारे फ्लैट की काफ़ी टाइम से रेकी कर रहे थे वो। शाम जी से? हाँ, वो हमारे कैमरे में आया है। जब वो रेकी कर रहे थे, आके जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं। पहले वो मेरे ही बेडरूम में आने वाले थे, वो भी मेरे बेडरूम की तरफ देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको आसान वो गैलरी पड़ गई तो उसमें ही कूद गए और कबाड़ गैलरी में ही था, उसमें से ही उन्होंने कैश और ज्वेलरी ली। आप लोग घर पे नहीं थे तभी? थे उस टाइम पे, हम लोग सो रहे थे। सो रहे थे? जी। पीछे के दरवाजे से आए थे? हाँ, पीछे के दरवाजे से आए हैं। अच्छा, कैसे दिख रहे थे ये चोर? हाँ, 20-22 साल के लड़के हैं दोनों। कैमरा में बिल्कुल साफ उनकी फेस आई है, उनको बिल्कुल भी कोई डर नहीं था। सारे कैमरों में उनकी शक्ल भी आई है और आराम से चोरी करके वो नॉर्मली चलते हुए निकल गए। ये चोरों को पहले कभी देखा था इस एरिया में, पहली बार ऐसे कुछ सस्पेक्टेड है? हाँ, अभी मालूम नहीं, इतना तो अंदाज़ा नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ता पहले हमारे एरिया में 2 बाइक चोरी हुई थी, तो चोर लेके गए थे। उनसे भी हम लोग फेस मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वही चोर हों, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस एरिया में चोरियाँ हो रही हैं और पीछे भी अभी 3 दिन पहले ब्रिगेंदा अपार्टमेंट में चोरी हुई है, उसकी भी कंप्लेन है। और बाइक्स तो मोस्टली हफ्ते में 1 बार चोरी होती है और पेट्रोल रात में चुराने के लिए डेली 1 दिन आड़ से आते हैं। बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है इस एरिया में। मार्केट में शटर काट के चोर चले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं। ये पीछे फ़िश मार्केट है, वहाँ पे सब मारवाड़ियों की दुकान है, क्योंकि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा है, तो वो लोग आते हैं देखने के लिए। बहुत ज़्यादा इस एरिया में चोरों का आतंक है और बहुत ज़्यादा कोई भी यहाँ पे तो सेफ इस नहीं एरिया है। में बहुत चोरियाँ हो गई है। मोस्टली सबसे ज़्यादा हाई रेटेड एरिया यही है चोरी का, पुलिस क्योंकि पेट्रोलिंग बराबर नहीं हो रही थी यहाँ पे? अब कैसे चोरों की इतनी हिम्मत पड़ रही है वो तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते। अब चोर हैं, अगर 3 बजे रात तक चोर सवेरे आया, 4:54 को चोर आ रहा है और 5:10 को हमारे घर से जा रहा है चोरी करके, तो मॉर्निंग हो गई, दूध की गाड़ी वाले आने का टाइम हो गया, सब हो गया, तो चोरों को तो कोई डर ही नहीं है, वो तो आराम से चोरी करके जा रहे हैं। अच्छा, तो टोटल कैश कितने थे? हाँ, 94,000 कैश था, 10 ग्राम की 15 ग्राम की चेन थी और 2 गोल्ड की अंगूठी थी 10 ग्राम की। आणि बाई आता शेजाराक एक चोरी जाल्या म्हाज्या, ते भांगारान कितें कॅश जाला म्हणटा, म्हाजी गेट उगडून भितर सरलो मनीस, पूण म्हाज्या वरान काय पावंक ना, ताका लागून चालूच चोरी जाता आनी हांगासर कांयच एक्शन जायना. थंय आतां फाटल्यान एक चोरी जाली, बायक गेली, कोणाचे मोबायल गेलो, तेंच्यांनी कंप्लेनां दिल्ली आहा, म्हळ्यार कांयच एक्शन जायना. कंप्लेन दिल्ली लोकांनी? हय, तेंच्यांनी दिलें, तेंच्यांनी दिलें, गाडी येयले व्हिडियो बी हें करपाक, हे- कांयच कंप्लेनां जायना, कितें हें जायना तो. ह्या एरियान कंटिन्युअसली चोरी जायत असतं? चालूच आसता न्हू, बारीक बारीक चालूच आहा मरता कितें कितें, कोणूच केअर करना. पेट्रोलिंग जावंक जाय ते जायना ह्या वाटेन. जायना ह्या वटेन येवंक जाय न्हू, आनी कोण हें करूंक जाय ते पळोवच ना न्हू. सगळे ते मार्केटान वचून बसलेले आसता, सकाळी फुडें पयशे सगळे हे आसता, कोणूच कोणाक पळयना मरे, इतलें हें जाल्लें आहा. टेनंट व्हेरिफिकेशन ते केल्ले फाटल्या दिसांनी, तेचो रिस्पॉन्स बीन कसो कितें? तें चालू आहा न्हू, सगळें हें केल्लें आहा, ते लोक आतां धांवता ह्या वटेन त्या वटेन. पयलीं तर कांयच नासलें, आतां लोकां कडेन कांयच नासलें पयलीं, येताले लोक रावताले वयताले कितेंय करून. आतां तरी मातशें तरी पुलिशेन घातलेल्या फायन बी घातलेल्या लोक धांवता आतां पुलीस स्टेशनाचेर. पूण रातचें पेट्रोलिंग गरजेचें आहा हांगासर? गरजेचें आहा न्हू, एक राउंड मारून जावं न्हू 4 3 रातचे. सकाळचें कांय ना, लोक भोंवता हांगासर, रूम भाड्याक आसता हांगासर, लोक चालू आसता. रातचे 4 3 4 ह्या टायमार चोरी जाता ह्यो. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन हांव परत एकदा सध्या तुमच्या समोर येयलो आसा. सध्या आमी पावले आसा कळंगूट नायका वाडो हांगासर. फाटल्या दिसांनी जशें आमी तुमकां सांगलां की ह्या दिसांनी चोरेचे जे प्रकार आसा ते जास्त प्रमाणात जावपाक लागल्या. आमी सगळे कडेन पळयलां, म्हापसा म्हणा, अंजुना म्हणा, कळंगूट म्हणा व हे ठिकाणी जाग्यार म्हणा कितलेशेच ह्या दिसांनी चोरयो जाल्ल्यो. फाटली जी व्हडली चोरी जाली ती म्हणजे नंदकुमार रायकर जो आल्डोनचो आसा, थेट तेची चोरी जाल्ली आसा. कमीत कमी 8 ते 10 लाखाचे भांगार लुटले गेले. त्याच्या उपरांत आम्ही पळयलें की अंजुना हांगासर एक ATM जी मशीन आसा पळय ते फोडले गेले. त्याच्या नंतर आम्ही पळयलें की म्हापसा मार्केटान जे नॅशनल ज्वेलरी दुकान आसा पळय ते फोडले गेले आनी करोडो लाखाचे भांगार सध्या लुटले गेले. पूण एक बरी गजाल की म्हापसा पुलिसांनी ती केस जी आसा ही क्रॅकडावन केली आनी त्या चोरट्यांक तेंच्यांनी धरलो. त्याच्या उपरांत ह्या दिसांनी आमी पळयलें की कमीत कमी 8 दीस जाल्ले चोरेचे जे प्रकार आसा पळय ते खंय तरी आमकां कमी दिसण्याक येताले. पूण अचानक आयज आमकां अशी खबर कळली की कळंगूट नायका वाडो हांगासर परत
परत एका फ्लॅटान हांगासर चोरी जाल्ली आसा. पूर्ण डिटेल जी आसा ही चोरीची सध्या अशे तरेन आसा की मुख्तार शेख व त्याच प्रमाणे जाहीद शेख हे ह्या फ्लॅटान रावताले आनी ह्या त्यांच्या फ्लॅटान हांगासर सध्या चोरी जाल्ली आसा. चोरीचो फूल अपडेट सध्या अशें आसा की ही जी चोरी जाली ती कमीत कमी 4 ते 4:30च्या सुमारास फांतोडेर जाल्ली आसा आनी अज्ञात कोण दोग जाण जे चोर जे आसा हे थेट त्यांच्या फ्लॅटाच्या फाटल्यान येयले गॅलरींतल्यान आनी त्याचे गॅलरी ओपन केले. आता हांव तुमकां ती पूर्ण जी अपडेट आसा पळय ती दाखयता. फूल हेचेर दाखयता की कशा तरेन चोर येयलो आनी कशा तरेन त्याचे भांगार व काही कॅश आसा पळय ते लुटली गेली. सध्या आमकां अशें कळ्ळें की कमीत कमी 95,000 कॅश जी आसा ही तेजे कडेन तेंची चोरली आसा. तर त्याच प्रमाणे काही भांगार जे आसा हे लुटले गेले. कमीत कमी ना म्हण जाल्यार 2.5-3 लाखाचे त्यांचे सामान जे आसा हे लुटले गेले. कमीत कमी 2.5-3 लाखाचे भांगार लुटले गेले अशी फूल इन्फॉर्मेशन सध्या आमच्या मेरेन पावलेली आसा. आता आमी थेट तुमकां व्हरोन दाखयता की तो चोरटो जो येयलो तो कसो येयलो, कशा तरेन तेणे चोरी केली पळय ती. आता आमी आसा सध्या त्याच्या फ्लॅटाच्या घरान हांगासर आनी आतां तुका व्हरोन दाखयता की चोर कसो येयलो पळय तो. ही जी आसा ही तेंची गॅलरी आसा. गॅलरी असल्या कारणान आता जो चोरटो जो आसा हो थेट हांगासरल्यान येयलो. चोरटो जो हांगासरल्यान येयलो आनी ही जी गॅलरी आसता पळय तेंची ओपन आसता हांगासर. ओपन असल्या कारणान हांगासर जे एक कबट आसा तो चोरटो हांगासर येयलो. कबट त्याने ओपन केले. ओपन केल्या उपरांत हांगासर एक तेंचे खंय तरी हँडबॅग आसा. त्या हँडबॅगान काही कॅश आसली ती कॅश त्याने काडली. कबट ओपन करून भितर जे गोल्ड चेन आसली पळय ती गोल्ड चेन तेंचे चोरली आसा आनी थेट हांगासरल्यान तो परत पावलेलो आसा. हे सगळें जे कितें आसा पळय ते CCTV कॅमेराचेर कॅप्चर जाल्लें आसा. ओनरा कडल्यान आमी जाणून घेता जाल्यार ओनरान आमकां सांगलें की हे जे दोन जे चोर आसा हे कमीत कमी मायनर आसा अशें दिसता. कित्याक CCTV कॅमेराचेर दिसण्याक येता की हे चोरटे जे आसा ही 17, 18, 20 वर्सां भितर जे चोरटे आसात म्हणून. आनी तो चोरटो जो आसा पळय एक चोरटो आहा तेतूंतलो खंय तरी पळोवपा खातीर रावलो की कोण येता जाल्यार. तेतूंतलो दुसरो जो चोरटो जो आसा हो थेट फाटल्यान जे कंपाऊंड वॉल आसा कंपाऊंड वॉलाचेर चडलो आनी कंपाऊंड वॉलांतल्यान तेंचे जे हांगासर जी पॅसेज आसा तेचे वयल्यान तो हांगासर सद्या चडलेलो आसा. आतां फूल आनी अपडेट कितें आसा पळय ती आमी तेंच्या फॅमिली कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. जेन्ना ही गोश्ट सकाळी फुडें तांकां कळली तेंच्यांनी तुरंत कलंगूट पुलिशेक कंप्लेन केल्ली आसा आनी कलंगूट पुलीस सध्या हेचो तपास करीत आसा. आतां टोटल कितलो कॅश आनी कितलो एमावंट चोरलो आनी कितले भांगार चोरले पळय ते आमी तेंचे जो मुख्तार शेख जे आसा पळय जो ओनर जो आसा आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. पूण सांगपाचो एक उद्देश म्हणजे जशें आमी ओनरा कडल्यान जाणून घेतले जाल्यार ओनरांनी आमकां सांगलें की ह्या म्हयन्यान कमीत कमी 10 ते 15 चोरयो सध्या ह्या वाठारांत सध्या कलंगूट नायकावाडो हांगासर जाल्लो आसा. कित्याक ही प्लेस जी आसा ही रातच्या टायमार एक नोंदली प्लेस आसा आनी सगळे चोरटे जे आसा ते खंय ह्या जाग्याचेर येता. पेट्रोलाची चोरी जाता, खंय गाडयांची चोरी जाता, अशे वेगवेगळे चोरयो सध्या खंय ह्या वाठारांत जाता. आतां ह्यो चोरयो जावपाचो कारण म्हणजे ओनरान आमकां सांगलां की खंय तरी रितसर पेट्रोलिंग जे पुलिसांचें जावंक जाय पळय तें जायना अशें खंय तरी दिसण्याक येता. जर रितसर पेट्रोलिंग जर जाल्लें पुलिसांचें जाल्यार इतल्यो चोरयो जे आसा पळय ते ह्या वाठारांत जावच्यो नसले. आनी अशें आमकां सध्या कळलेलें आसा की हे जे दोन चोरटे जे आसा पळय त्याच राती खंय 3दा येयलेले. पयलो येयले खंय 1:30 ते 2च्या सुमारास ते पूर्ण जी एरिया जी आसा पळय ते सर्वे करून गेले. तेच्या उपरांत 3 ते 3:30च्या सुमारास ते परत येयले चोरटे. तेन्नाय खंय फूल एरिया जी आसा ही ते पळोवन गेल्ले आसा. त्याच्या उपरांत 4च्या सुमार हे चोरटे थेट चोरपा खातीर येयले. ते कित्याक 2दा जेन्ना ते येयले तेन्ना फूल तेंच्यांनी जी एरिया जी आसा ही तेंच्यांनी कॅप्चर केली, सर्वे करून गेले आनी थर्ड टायम ते परत त्याच राती येयले आनी तेंच्यांनी 4 ते 4:30च्या सुमारास ह्या फ्लॅटान तेंच्यांनी चोरी केल्ली आसा अशी सध्या आमकां ओनरा कडल्यान कळलेलें आसा. आतां फूल आनीक आमकां जितली अपडेट ओनरा कडल्यान मेळत रावतली ह्या चोरये बद्दल तितली अपडेट आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान.